এটা first of all, I can tell thanks to Dr. Siprarani and thanks to the OUTR Swimming Department for giving an opportunity to be here. Okay, I'm very happy to also see you and be here actually. After this, again, I will go to Hydro 2023 at NIT Warangal. Again, as a keynote there also, and session chair I'll do. Okay, so, actually I'm very much loving to be here in our state capital and within OUTR and with Dr. Siprarani and many actually our my students also here actually, Professor Deva also. And this institute, I love this actually, and okay, I came to know that most of you are belonging to, many of you, most of you are belonging to water resources, water resources. So some things I can tell today. These forenoon sessions, that is a multilinear regression, I think, slides has slide. So first of all, again, I just, I can tell very good morning to all of you again, and welcome to this, my class, my, this lectures. I already have to actually committed to give two lectures, two topics, that is how we can apply that multilinear regression techniques to predict flow variables in water resource engineering. Okay, that is the first. Second is afternoon time, application of computational fluid dynamics for again predicting different flow variables in water resource engineering and other fields also. It can be applied not only in water resources, we can also apply it to other fields, not only also civil engineering, to the other discipline also. Many times when I give lectures actually to other discipline also, this, okay, that techniques, but to other specializations it is done. First about ଅଛି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନା ତଳକୁ ତଳକୁ ପୁରା ତଳକୁ ଆସ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଦେବି। FDP कोड नहीं रही, I don't know.
তাহলে এটা আমরা এটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে এটি হোয়াটসঅ্যাপটা দেখুন আমার হোয়াটসঅ্যাপটা খুলতে পারি
this first session will go with this multilinear regression techniques for the application of water resource engineering. This actually techniques, when actually I started my PhD, that time I thought how to link with a dependent variable with independent variable, because that is actually main need of our human when we are doing research. Because in engineering and technology, we always see mathematics, equations. That equation actually tells everything about that prediction of any flow variables. Suppose you see in a river, when the river is flowing, we have the water resources engineering department, not only in our state, you see every states, and also in our country, that is CWC, Interwater Commission, and so on. Water is very important, already you know that things, okay. And you see, and the water actually main water we get from river, okay. In the river we get, and in that river challenging thing is that how to get know how much quantity of water is flowing, the discharge, Q, isn't it? To get the discharge actually in the river, it is very important, not only for our prediction of it will help for designing of any hydraulic structures or something. Also, it will help us for flood predictions, isn't it? So that is very, very important. Okay. So for knowing the discharge, actually, what to do? Very simple things you see. Just the background of BTech, I am telling you. For the background of BTech, that Manning's formula, suppose Q is equal to 1 by N R2 by 3 SF into area. Okay. In that Manning's formula, Q, that the Q is there, that formula is with us. Q is equal to 1 by N R2 by 3 into S to the power half into area. Okay. So Q is depending upon all these things, N, hydraulic radius, and slope, and area, so on, like that way. Okay. This we call as independent variables. Actually, in the site, we have the information of the slope, we have the information regarding the material, where we tell this is the Manning chain. Okay. And we also have the gauging sites, where we know the depth of flow, and we know also the cross sections actually. Okay. From that, we tell this much of flow is there. If you know that much of flow, then we can go for designing of an hydraulic structure, dam, barrages, whatever it is there. Also, we can tell about the prediction of flood. Flood कितना जा रहा है, कितना होगा, सब फिर बाद में आ जाएगा. You know it. So all of you actually, sometimes when I am telling in Hindi, no problem to anybody. All of you belong to Odia, Odisha. Odia भी ठीक है. I am also Odia also. I belong to Cuttack. Okay, anyhow, because I am a teacher at NIT last 26 years. That's why I am habituated in English, and sometimes also Hindi I also tell, so that students will be थोड़ा ज़्यादा close लगेगा, mind. But my mother tongue is Odia. I also can tell, opportunity to tell also here. Okay. So you see, then why I am told that about that formula? The dependent variable, dependence actually, which we will get actually. Independence, actually, those we immediately get the information. Okay. That is a challenge to this I told for river. Even you see for any specialization, any field, these things is there. वो software में वो formula आता है. Software takes the formula and tells the results. Suppose HECRAS. Okay, HECRAS, it gives discharge, suppose at different sections. Okay, and we predict how much of the depth of flow, maybe flood routing,
maybe, okay, many things you can get it, and it actually counts from that formula mainly. Other formulas are there to help. Okay, means dependent variable and independent variable ka jo relationships, it is much essential actually to be obtained. Okay, for that actually this multilinear regression techniques is actually very vital, important. Okay, and you see, I can very proudly that I have already 100 एशियाई जर्नल्स, एक दो जर्नल में आईआईटी एनआईटी में पीएचडी के लिए अप्रूवल दिया जाता है, एक पीएचडी के लिए 2 एशियाई जर्नल हो जाएगा तो आराम से, ओके, दैट बीएससी अप्रूव्स फॉर थीसिस सबमिशन के लिए. ओके, सो I have already contributed 100 SCI journals, 100 SCI, not, I am not telling any other journals. Okay, SCI, Scopus also, Scopus थोड़ा पीछे होता है, SCI थोड़ा सबसे टॉप है. SCI Scopus means actually from these techniques actually it has helped a lot. This multilinear regression techniques, because we have the data. What to do actually, another thing I will tell those will be doing research or maybe in the field actually, we have the data, then we should have a model. और मॉडल होने से बाद में without data we can tell this much of discharge is going or something is happening. Forecast we can do also, you can have the forecast. Okay, so model is a very much essential, and I am again telling this for this develop models, this multilinear regression. So all of you know what is regression, must be knowing. Regression क्या होता है? Can you tell anybody what is regression? Then what is yes, okay, then what is a multilinear? Linear, what is a linear? Because देखो title पहले we should focus on that. We should know actually why the title carries everything. Okay, because multilinear is there. Then what is linear? What is linear? You know? Please tell. Don't do yeah. What is linear? Line. From a line it is, from that term is linear. What is multilinear? Okay, yes, actually because of dependent variables of Q, but it is depending upon many independent variables like slope, area, then our depth of flow, all these things. There are 3 independent variables. Okay, so for each variables dependent, independent, जो relation है, एक का it will map actually linearly, sometimes linearly, sometimes non-linearly also. Okay, generally it is non-linearly varies, but there is actually mathematics ज़्यादा नहीं है non-linear के लिए. Sometimes we convert something to make it non-linear को linear करते हैं, फिर उसको actually I will tell that things actually. Okay. So this actually many times I have presented in our in country, in the different organizations, also in abroad also. Okay. You see this regression very quickly. I will go actually. 200 slides are there. I am very much interested to tell many things, but I know that time चला जाएगा फटाफट. Okay. Whatever possible, I will try to convince you. Okay, just very quickly, you can see, please. So all of you, I want that you should enjoy actually. Enjoy the course, because my aim is that I want to give something. Okay, these things actually not possible that within 1-2 hours you will get everything, but some ignition actually you will get it. Okay. After that you can contact with me, or from others also you can enhance your things. So you see, I have already told that this regression techniques can have application in many fields, not only in our engineering, also in economic management, okay, so it's science like that way.
ओके सो जल्दी चला जाता है, वो नहीं चाहता है एक्चुअली. यू सी रिग्रेशन एनालिसिस इंक्लूड्स ओके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सपोज आई एम टेलिंग देन मैनेज फॉर्मूला डिस्चार्ज टू गेट द डिस्चार्ज. चॉइस ऑफ द relevant variables. Which variables we should choice means slope. जैसे मैनिंगसन फॉर्मूला पता है. ओके सो दीज आर द वेरी थियोरिटिकल थिंग्स. देन कलेक्शन ऑफ डाटा, specification of the model, then fitting choice of the method, fitting of the model. So these are the steps actually. Then model validations and using the chosen model for the solution of the post problem and forecasting. So these are the steps actually we will follow while doing any model, and for this multilinear regression also we will follow that thing. Okay, and you see I will tell about that regression models are generally 4 types. जनरली रिग्रेशन होता है, बोलते हैं रिग्रेशन करना, डाटा से जो होता है रिलेशनशिप निकलता है, that we call generally regression. Okay, you see there are 4 types of regression techniques we can do: simple, multiple, linear and non-linear. What is simple? When actually there is a suppose discharge के लिए I told we are depending on 3-4 variables. Okay, that is not simple. That will be multiple actually, because it depending on multiple things, multiple parameters. Only slope दे देने से discharge नहीं निकलेगा. We have to put also depth, other things. Simple means only 1-to-1. एक डाटा देने से माने एक वेरिएबल देने से other variable निकल जाएगा. When we get it, that we call as simple. Even linear means, you see, linear means it's a straight line. Means suppose y is equal to ms plus c. It is a straight line equation. Y, how? Depending on x. It is a straight line equation. It is very simple. We can get it. That called as linear. Non-linear means when it is not a linear relation, is not a straight line. It is a maybe logarithmic, maybe exponential, any types. Many functions are there. Okay, so we divide into 4 types. Okay, these are the objectives actually. What we do, I will not tell. Already I am telling actually. Just quickly see. It will give the relationships, and it also understanding the internal relationships, interrelationships, and some relations are deterministics and easy to interpret. And that's okay. So these are the objectives. I will not invest more time here. I have told you one is our predictor variable, and दूसरा क्या होता है? Response variable. Discharge is our what? I'm simple formula. Simple. I'm telling you that formula. Your Q is equal to Manning's formula 1/n R2/3 SF into area. Okay. So Q is our response जो निकलता है. Okay. We are interested in discharge. क्या discharge है? Okay. Flow कितना है? रिवर में कितना फ्लो हो रहा है? How much? पानी कितना जा रहा है? That output हमारा चाहिए. इंजीनियर को भी चाहिए. हम लोग को सबका चाहिए. पब्लिक को भी चाहिए. कितना पानी जा रहा है? Okay. न्यूज वाला को भी चाहिए. That we call as response variable. Sometimes we call as output also. और why? देखो कितना नाम है. Confusion नहीं होना है. Then, but it is depending upon 3, 4 or 1 variables that we call as predictor variable. Okay. That means y and x. Okay. So simple is, I will very quickly tell, I have already told, y is equal to mx plus c जो formula तुम्हारा you will have learnt during your high school times. अभी थोड़ा एडवांस में बोलेंगे. Suppose this is the equation we are getting from our dependent independent variable का relationship से. Suppose you are getting this, but it still it is not matching.
and whatever remaining we call as error, epsilon. Okay, we call as it is a calculating error. So how we actually fit it? Actually, you must have noticed in your Excel or any softwares, when we plot between our suppose Q is depending upon some H, we call as test discharge, is not it? Rating curve, suppose. You see, rating curve, all of you know? Rating curve, if you are water resource engineers, BTech completed, must have known actually rating curves. Rating curve is the relationship between discharge and depth of flow. Okay. So you see, if you plot in a straight line, then suppose y is our discharge, x is our depth. Suppose, and we are fitting a straight line. It is not a straight line actually. Suppose we are fitting, because that software does not know what we are doing. If you fit a straight line, it will do like this, but some error, so ho jayega. When you fit this actually, this straight line like this, the data is scattering both sides. Okay, and it does actually by least squares. Means what is the least square? This line is drawn so that the error will be minimum. Square of the error means this is the line the software is telling. If you are following a straight line, but this much is the error. Square of this, all this total squares of this will be minimum. That is called least square. And following this actually, it fits actually, fitting of this. So it is getting actually this y. Y is something different. Y is here, you see. Suppose this point. This is x. X is okay, but this is this is y, and this is x. But the straight line when we are fitting, x is for x, same x, it is giving different y. Okay. So this y is, we are getting some error. Then what is a linear regression? I told about linear. This is the linear. Then again you see, for one type of data, means depth, you are this is the relationship. When you tell about slope, about Manning-Shan and cross area, many other variables, if you give it, and you have to map individually Q versus depth, then Q versus N, Q versus slope. वो individually वो क्या करेगा, relationship निकालेगा. You will try to find out. Okay, and it will find out linearly. लेकिन देखो, एक को रिलेशन अच्छा होगा, दूसरे के लिए सेम इक्वेशन cannot. So again, we have to compile all this relationship. Finally, we have to generate a final equation. वो सॉफ्टवेयर करता है actually. Don't worry, just you have to understand actually. Okay, जैसे स्विगी, जोमेटो, we type it and आ जाता है हमारा पिज्जा और बर्गर. तो अच्छा नहीं है, I am encouraging you. चूड़ा सबसे अच्छा होता है. और ये, but you see, we are not thinking क्या gradient है, ingredient है. But हमको, okay, so these are the things actually. So different ingredients, जैसे तुम्हारा I told in the pizza and burger में थोड़ा चिकन भी होता है ना कभी कभी, हाँ. So you should know also क्या ingredient है. फाइनल तो पिज्जा हो गया, नेम इज पिज्जा. जैसे सिमिलरली हमारा डिस्चार्ज हो गया, फाइनली डिस्चार्ज जो हो गया किन पर डिपेंड करता है. आई एम अगेन टेलिंग दैट थिंग, सेम थिंग, बिकॉज यू शुड नो एक्चुअल हाउ इट इज रिलेटेड. एंड सेम थिंग्स, सिमिलर थिंग्स विल आल्सो हैपन फॉर एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस. आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा जो लाइन में रिसर्च करते हैं हो जाएगा आराम से. बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. ओके, एंड यू शुड अंडरस्टैंड तुम्हारा सॉफ्टवेयर में हाउ इट इज लिंकिंग. तुम्हारा पिज्जा में क्या क्या चीज बड़ा, नहीं तो क्या होगा, पिज्जा खाते जाओगे 2 साल के बाद फिर
मेडिकल रिपीटेड बीमारी हो जाएगा, क्योंकि इनग्रेडिएंट तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छा नहीं था। मीन्स क्या क्या डालते हैं, अच्छा लगता है तो दो थोड़ा ज़्यादा चिली और क्या क्या पता नहीं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू शुड नो। सिमिलरली दैट इक्वेशन सॉफ्टवेयर में तुमको पता होना चाहिए। ओके, इंजीनियर और रिसर्चर को जो भी है पता होना चाहिए कि व्हाट आर द इनपुट, दैट इज कॉल्ड आल्सो इनपुट वेरिएबल्स। ओके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंड तो ठीक है, डिस्चार्ज तो निकलना ही पड़ेगा, पिज्जा खाना ही पड़ेगा, बट ingredient is very important. Okay, so these are multiple you see variables x1, x2, sk, and software actually it relates in a linear types, individually linear equation, means y is equal to mx plus c bola na, mx m1 x1 m2 x2 like that way, m3 x3 x1 x2 x3 x4 like that, many variables are there, but it is depending upon linearly. That's why name is multilinear, and it does some regression, some okay processing, so that it is getting a final equation. तो एक्सेल में होता है, एक्सेल में तुम गूगल में मारो मल्टीलिनियर रिग्रेशन टूल, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आराम से हो जाएगा, 1 घंटा का ओनली हेल्प चाहिए, बड़ा बात नहीं है, बट शुड अंडरस्टैंड, नहीं तो फिर बीमारी पड़ा, जैसे बताया पिज्जा तो आ जाने के लिए बहुत ओके इमीडिएटली आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी एंड थिक पिज्जा होना चाहिए, दैट थिंग्स रिक्वायर्स बैकग्राउंड ऑफ दैट, क्या क्या इंग्रेडिएंट है तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा रहना है, सब तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बिकम क्रूशियल एक्चुअली, वी आर नॉट नोइंग एक्चुअली, प्रिजर्वेटिव भी होता है, खा देते हैं, अच्छा बिस्कुट मिलता है, वी शुड नो एक्चुअली मैनी थिंग्स, सिमिलर टू दैट ऑल्सो हियर वी शुड नो इन दैट इक्वेशन, और जो सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर है हैकरास अच्छा है और माइक अच्छा है और एनी अदर सॉफ्टवेयर, क्या क्या इंग्रेडिएंट लेता है, क्या टेक्निक लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्या होगा, रिजल्ट निकल जाएगा बट विथ मच एरर एंड नॉट विद द सेटिस्फैक्शन. So you see, same thing, whatever I've written, don't worry looking to that much of the content here. I'm just telling, you see, this is the equation. And these are the error. Error कम रहेगा यहाँ पर. जो सिंपल इक्वेशन था y is equal to जो पहले था, उनका एरर कम हो जाए, because it is taking care of all the things, relations, strong relations लेता है. And these are the actually matrix equations, same things. This equation and this both are same because many data are there. That's why in the matrix forms we can write like that. Okay, just I will very quickly tell actually how that equation I show we have applied. One of my PhD student का thesis का काम दिखा रहा हूँ. Okay, and that paper ASC में American Society of Civil Engineers में पब्लिश हुआ है. When we publish a paper in ASC Journal of Hydraulic Engineering और Journal of Hydrologic Engineering, वो क्या होता है, बाद में सॉफ्टवेयर वाला जो हैकरास वो सब वही इक्वेशन को लेते हैं, निकालते हैं. एक्चुअली वी डोंट नो एक्चुअली बैकग्राउंड, बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर हर टाइम वो पेपर अच्छा अच्छा पेपर का बैकग्राउंड लेता है. यू शुड नो दैट थिंग, यू नो ऑल्सो, बट ओके दैट्स व्हाई पेपर इज इंपॉर्टेंट. हम लोग पेपर निकाल देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला का जो काम करते हैं बहुत सारे ना, वो सब देखते हैं जो काम है, तो इसीलिए मैनुअल में पढ़ना चाहिए क्या लेता है क्या नहीं. ओके, and this is a work that I will tell. Same Manning's formula, sorry. This is the title actually. Modeling of stress discharge curve and straight and curved channel. देखो क्या होता है, just because our great engineers are here also, I am very happy actually. You see, जो सॉफ्टवेयर दे देता है वो स्ट्रेट चैनल के लिए देता है, Q is equal to 1/n R2/3 S half into area. That formula you know is for straight channel. When it is a curved channel, sometimes software does not know,
So the engineer should know actually which condition that section is lying. When it is a curved channel, much error. Actually, some formulas like Coan or many formulas are there where they have multiplied some factor. जब डिस्चार्ज निकल गया कुछ फैक्टर निकल दे मैंने मल्टीप्लाई कर 30% मोर डिस्चार्ज. देखो खेल की बात नहीं है. 30% 40% ऐसे जस्ट जोक में बोल देंगे ऐड कर दो एक्स्ट्रा. ओके बट वी आर डूइंग. गवर्नमेंट भी 100 करोड़ खर्चा कर देता है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्चुअल सॉफ्टवेयर. ओके सो फॉर दैट एक्चुअली वी हैव वर्कड. हमको एक DST में अप्लाई किया एंड DST इज अवार्डेड प्रोजेक्ट. बहुत बड़ा फंड था हमारा NIT राउरकेला में. बहुत बड़ा मॉडल स्टडी है. ओके एंड देयर एक्चुअली we have claimed for 5 meandering channel. Meandering means band channels. कम बैंड, छोटा बैंड, बड़ा 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 एकदम बड़ा बैंड. आई विल शो दैट फिगर. ओके हमारा NIT राउरकेला में बहुत बड़ा लैबोरेटरी है वेयर कंट्रोल मैनर में यू कैन मेजर द डिस्चार्ज, यू कैन मेजर द वेलोसिटी, all the things are there. Okay that facility actually our laboratory is a international standard laboratory actually. Okay so if you get an opportunity you can come and see because we have collaborated the UK all universities, Birmingham, Nottingham, Loughborough, all the university, USA, France, जापान और सब साइंटिस्ट एंड रिसर्चर आए थे. अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली हमारा स्टेट में ज़्यादा मेरा काम नहीं हुआ. मैं थोड़ा बिकॉज मेनी टाइम्स आई स्पेंड देयर बिकॉज आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटी एंड इसलिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट खत्म हो गया. लेकिन स्टेट में अभी कुछ कर रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा. ओके सो यू कैन सी एक्चुअली बिकॉज जब मॉडल होता है वैलिडेशन करना पड़ता है पूरा करेक्ट है ना नहीं. वो तो रिवर में डायरेक्टली हो नहीं पाएगा. रिवर में इतना बड़ा में कैसे करेंगे, क्या डिस्चार्ज आ रहा है पता नहीं होता है ना. ओके सो आई विल टेल अबाउट एक्चुअली इन अ कर्व चैनल हाउ वी हैव मॉडल. Just to make you interesting, actually I have some photos I am showing very quickly. Straight channel दिखा है ना नहीं. हमारा ओडिशा is full of rivers actually. Okay, these are straight channels. Some names are also there. Not to make you bore, I am showing some figures. And this is a meandering channel. तो स्ट्रेट में देखो फॉर्मूला ठीक है कितना पढ़ लिया, लेकिन जब बेंड होता है ना तुम एक्चुअली हैव यू एक्सपीरियंस्ड व्हेन यू ड्राइविंग एंड इन अ कर्व पाथ व्हेन ड्राइविंग क्या होता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज देयर. वेरी गुड. बहुत बड़ा काम करता है वो. साइलेंट है एक्चुअली किताब. मैंने किताब थोड़ा दे देते हैं लेकिन बेसिक नहीं बोलते हैं. व्हाई इट इज हैपनिंग मेनी थिंग्स दे आर साइलेंट एक्चुअली. वो भी ठीक है आस्ते आस्ते ग्रो होता है दुनिया में. यू सी सपोज व्हेन दिस इज द क्रॉस सेक्शन हियर इट द बेंड एपेक्स बोलते हैं. वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन हो जाता है. यू सी आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड क्या सन. नहीं होता तो क्या होता बताओ. थोड़ा थोड़ा मेक यू रियलाइज क्या हो जाता. वो तो हो जाएगा और क्या बड़ा होगा बताओ. तो रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा. हम पूरा मर जाएंगे इमीडिएट. क्यों. वो तो दिन रात तो छोड़ो वो भी मैंने सेकेंड फैक्टर जैसे डैम फेलर का पूरा कोलैप्स हो जाएगा. सन का साथ मिल जाएंगे हम लोग. क्यों. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बैलेंस करता है. पता है प्लस 2 में पढ़े होंगे. जो रोटेट करता है ना 365 डेज में एक बार होता है. वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है. सेंटर रिफ्यूज फोर्स एंड बैलेंसिंग बाय क्या दैट इज आवर ग्रेविटेशन. वही तो जी है ना. ओके वो बैलेंस करके चल रहा है. दुनिया चल रहा है. कभी थोड़ा कम विष हो जाएगा ना इमीडिएट गया. पता नहीं क्या अर्थ है क्या क्या सब कुछ. और द सिस्टम विल कोलैप्स. मिल जाएगा. सन इज अट्रैक्टिंग ना m1 m2 by r² g m1 into m2 by r². नो और नॉट द फॉर्मूला. न्यूटन्स
कितना बड़ा चीज बताए हो. ओके, फ्रॉम दैट वी कैलकुलेट g associated to gravity. Also we calculate the escape velocity जो हम हमारा पढ़ाया था ना, भेजा था, हाँ, चंद्रयान. अरे देखो कितना मेहनत कर, सब फॉर्मूला से होता है, कितना वेलोसिटी में जाएगा वो सब तुम्हारा जो. ओके, देन विल नॉट कम बैक टू द अर्थ. दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी बिकॉज इट balances between the force between your centrifugal. So when water is also flowing in that channel, okay, there is a force experience, center refuse out from the center. तुम भी जो रोड होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर क्या करता है, टू बैलेंस इट बैंकिंग अप करता है ना, बिकॉज जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है ड्यू टू दिस बैंड, it should be balanced by that component of this weight. Yes, super elevation. Yes. Okay, so very simple things, लेकिन सब जगह पर एप्लीकेशन होता है, थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर भी. So we have what on that actually meandering channel or curved channel. कितना होगा that things actually, but I have not gone on that basic things, but because river is so complex and so ये, so हम लोग क्या क्या actually from database we have generated some regression. बहुत तरीका में होगा रिसर्च. मुझे लगता है कि तो वही मेंडरिंग चैनल में आप 15-20 PhD निकाल लूंगा. हमारा तो NIT में सबसे मेरा हाईएस्ट PhD गाइडेंस, आई एम टेलिंग यू, हमारा डिपार्टमेंट में. ओके, बिकॉज एक्चुअली आवर थेसिस गोज टू टॉप 30 ऑफ कंट्री वर्ल्ड का जाता है, हमारा सब है एक्चुअली. NIT राउरकेला मेंटेन्स क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी. इवन ऑल्सो IITs आई हैव सीन दैट दे इग्नोर दैट थिंग. ओल्ड IITs आई एम टेलिंग. ओके, बट आवर थेसिस अभी भी है. तो इंडिया का भी एक थेसिस आता है, इंडिया में बेस्ट 20 और 30 ऐसा है NRF, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड का भी जाता है QS रैंकिंग. ओके, तो सब क्वालिटी में होता है. एनीहाउ यू सी, तो वो सब में जो जाता है ना, सब जो एग्जामिनर वो पूरा देखता है क्वालिटी. ओके, दैट्स व्हाई हमारा बहुत क्वालिटी. व्हाई आई टोल्ड दैट, बिकॉज आइडिया होने से बहुत कुछ हो जाता है, बड़ा बड़ा आइडिया बहुत कुछ होता है. Because we have done on the, actually I told not the basic that centrifugal that, but we have done in another way. You see, I am showing you, see, all rivers meander. Generally, वो भी बड़ा theory है. Why river meander? Straight नहीं जाता है, क्यों? Can you tell me? Why meander means curved path. Straight नहीं जाता है river, क्यों? देखो मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, मैंने फंडामेंटल थिंग्स आई एम टेलिंग, बहुत सारी चीज बता लिया. दैट्स व्हाई, ओके, ड्यू टू टोपोग्राफी एक्चुअली ऑलवेज ट्राई टू हैव स्पेंड मिनिमम एनर्जी. हम यहाँ पर आने के लिए मिनिमम एनर्जी कैसा खर्चा करेंगे, इसीलिए वो क्या होता है, डेफिनेशन बोलना चाहता है. ठीक है, मैडम जब बताया ड्यू टू टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या होता है, मिनिमम एनर्जी नहीं देता है, इसीलिए वो बैंड ऐसा ऐसा ले जाता है. तो रिवर तो करता है ऐसा, एंड हम लोग को भी काम भी करना पड़ेगा. ओके, तो यू सी इन द नेचर, तुम जब फ्लाइट में जाता है फोटो लोग रिवर का, तो स्ट्रेट नहीं आएगा मेंडर. ओके, देखो, सो मेनी फोटोज आर देयर फॉर रिवर मेंडरिंग. यू सी, इतना देखो मेंडर आराम से चला जाता है, लेकिन ऐसा जाता है. एंड हम लोग भी कोशिश में है कि थोड़ा इंटरलिंक कर देंगे. अभी हम दिल्ली में गए थे, नितिन गडकरी सर, ऑनरेबल मिनिस्टर भी देते ये. कभी कभी हमारा जो, बिकॉज वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, वो सब भी हो रहा था. जस्ट 15 days बिफोर आई वाज अटेंडिंग ए मीटिंग एक्चुअली in Delhi. Okay, very quickly that things you are already started actually, some rivers, but still we are thinking a lot. वो तो कर देंगे स्ट्रेट, लेकिन जैसे मैडम बताया टोपोग्राफी एंड मिनिमम एनर्जी के लिए रिवर फिर कोशिश करेगा, फिर गड़बड़ कर देगा. इसीलिए वो टच करने के लिए पहले, काम करने के लिए पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. ओके,
वो सब रिवर्स का नाम हमारा स्टूडेंट दिए थे, तो स्लाइड में था। ये चित्त पानी टी दो बेटा। देखो many photos of rivers. Now I will go actually how we have done the model. Okay, very quickly go. Otherwise you will not cannot understand. जितना जल्दी जाएगा अच्छा है, because देखो two things are there. धीरे धीरे जाने के लिए टाइम चाहिए, एंड वो टाइम नहीं आएगा अभी. ओके, इसीलिए जल्दी से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने माइंड होने से बाद में यू कैन डू मोर थिंग. देखो have you come across the formula, common formula? Those who have read actually what it says open channel flow, fluid mechanics. Fluid mechanics का part है open channel flow. You see in the some books, जो Manning's formula I told, Q is equal to 1 by n, वो n हमारा बहुत बड़ा चीज है. Manning's वो formula देकर चल मैंने okay, but scientist वो चला गया. It is good actually in our area, but this n बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली. n के लिए कावान है another scientist actually they have given a formula n equal to nb. nb means base man topography का जो n, n1 n2 n3 n4 so on. What is n1? n1 due to irregularity, n2 due to surface roughness, n3 due to vegetation suppose, n4 many factors are there where okay n is not a single thing again. So it is claimed that, and what is m? M is meandering effect. Okay, m is meandering, and it was suggested by Kahn formula that you just multiply 30% extra to get actual Manning's n. Then go for the discharge formula, Q is equal to that formula, Manning's n. Okay, so Manning's 1959 में, because life is very short. मैं तो देख रहा हूँ मेरा 26 ईयर कैसा चला गया पता नहीं NIT में. I am telling really. After my MTech, I joined there, okay, as a faculty, and I got a chance to do PhD in UK and IITs also. But as a faculty, we are not permitted to go outside. Professor Sorangi जब आए तो I did PhD in my own institute as a faculty there. Okay, तो इतना जल्दी टाइम चला गया मुझे पता नहीं चलता है. मुझे लगता है कि 25 days से भी कम. Because actually I was enjoying my job, my research, my work. Okay, इसलिए चला गया. Similarly देखो कमान भी है वो देखो. So you see these factors actually वो फॉर्मूला दे दिया लेकिन तरीका ठीक नहीं था. What we realized, our PhD student myself. Okay, after that actually many researchers, Siano is from UK, वो हमारा laboratory आए थे. He is also collaborated with me. वो भी एक फॉर्मूला दिए थे. Many equations are there, but okay, वो सबको ट्रस्ट नहीं किया. हम DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको रिवार्ड किया एक प्रोजेक्ट only to do research on that, around 60 lakhs. पैसा दे डाल दिया कि खर्चा करो आराम से, खाना खाओ, स्टूडेंट का मैंने सलाह जो ये ट्रैवल वो सब रिसर्च में नहीं देखा जाता है कि पैसा कितना खर्चा हुआ, सब होता है. इक्विपमेंट वो सब मिलाकर 60-70, ज़्यादा नहीं, वो 15 years before I am telling you. This 15 years before. Okay, I will tell on that actually. I think actually a friend of Chitta, Saini तुम्हारा सांगो ना, ना तुम जूनियर ना, सीनियर, oh senior सर, मतलब लागू नहीं actually. I just think that you are वर्षों साल लगा. Please try to enjoy actually, and how I can reach properly with you actually I am just still wondering, because I know many of you will still feeling boring. Okay, please don't, because I am telling you the some research things. I can give you the
PDF थोड़ा मॉडिफाइड PDF दे दूंगा बाद में, इट कैन बी शेयर, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन लिखो एक्चुअली, थोड़ा लिखने से भी तुम्हारा बात में याद रहेगा। ओके, थोड़ा देखो जो दिस आर द फॉर्मूला। एंड यू सी, मैं जो PhD किया वो फॉर्मूला दिया था मैं PhD के लिए फटाफट काम कर लिया, बट दैट फॉर्मूला आई रियलाइज दैट स्टिल कमती रह गया, इसलिए मेरा स्टूडेंट का टाइम में आराम से हुआ, मैं दिखाऊंगा। सो क्या होता है PhD जब करते हैं कि MTech सेकेंड ईयर जो प्रोजेक्ट होता है, 1/3 ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे मीन्स किताब में क्या है, ऑलरेडी तुम्हारा पेपर में क्या है, मैंने व्हाट काम क्या क्या हुआ है ऑन दैट। ओके, सो आई एम समराइजिंग ऑल द थिंग्स। यू सी, कवान हो गया, कवान का बाद देखो मेरा नाम भी यहाँ पर, पात्रो सर मेरा गाइड थे उधर में। ओके, आई वाज सीनियर एक्चुअली एज ए फैकल्टी देयर, पात्रो सर लेटर ज्वाइन, बट आई हैव टू टेक ए गाइड एंड सर। ओके, तो दिस फॉर्मूला वी हैव जनरेटेड, बिकॉज नहीं लिखने से तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू कन्विंस टू ऑल टॉप साइंटिस्ट एंड बड़ा जो इंजीनियर है सब, मैंने उनके सामने सब रिवार्ड होता है, बिकॉज एवरीबडी शुड रियल थिंक दैट पैसा जो ओके प्रॉपर्टी ऑफ जो भी पीपल्स का, वो ठीक से रिसर्च में ठीक से इन्वेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लाओ खाना पीना खा लो कॉन्टीजेंसी कंज्यूमल तो बहुत है, बिकॉज रिसर्च में वो सब नहीं दिखा जाता है। ओके, ट्रैवल, सो यू सी, इसीलिए लिटरेचर दिखा जाता है कौन ऑलरेडी को काम कौन किया है नहीं किया। ओके, सो दीज आर द बैकग्राउंड्स। These are the formula actually. There are 3 formulas actually, Manning's formula, Chayes and Darcy's. Very quickly again I am showing जो formula बता रहा था ना वही formula. Okay, वही formula है finally. All of you know this formula? Simple formula. Then again I want to tell you, because now I will go to the actual you can tell. तो क्या किया गया देखो, अभी स्टडी होने के बाद हम लोग क्लेम किया, these are from literature, we claimed all the things. This see, Manning's n क्या क्या पैरामीटर डिपेंड करता है, हम फाइनली क्लेम किया। क्या क्या? साइनोसिटी। व्हाट इज साइनोसिटी? वो जो मेंडरिंग होता है ना, उनको डेफिनेशन देने के लिए नाम है साइनोसिटी। बैंड लेंथ बाय स्ट्रेट लेंथ, दैट इज कॉल्ड साइनोसिटी। ऐसे बैंड बोलने से नहीं होगा ना, कितना बैंड है, टू डिफाइन इट कर्व लेंथ बाय स्ट्रेट जाने से कितना होता। इफ यू डिवाइड इट, दैट वी कॉल ए साइनोसिटी। साइनोसिटी हो सकता है 1.2, 1.4, 5 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नेम इज साइनोसिटी। व्हाई? कैन यू टेल? एक्चुअली साइन कर्व। रिवर देखो, वो भी प्राय 100 PhD निकल गया। व्हाई इट इज साइन? अगेन रिसर्च हुआ है, साइन क्यों होता है। तुम देखा वेब ऑल्सो साइन होता है ना, वो भी देखो मिनिमम एनर्जी होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स वाला जो होता है ना, वेब, that also if you see actually all research science merge actually, वो साइन कर्व होता है। ओके, एंड दिस साइन से नाम साइनोसिटी है, लेकिन बैंड लेंथ बाय स्ट्रेट लेंथ। सिमिलरली व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? width by depth of flow and width. We make it non-dimensional, because otherwise क्या होगा, तुम जितना तुम्हारा पेपर बनाओगे, जितना तुम्हारा लैबोरेटरी में करोगे, क्या फायदा होगा? हाउ टू मेक इट एप्लीकेबल टू द फील्ड, बिकॉज फाइनली हम तो रिवर को करना पड़ेगा ना। सो वी मेक इट नॉन डायमेंशनलाइज, डायमेंशनलेस करना है। साइनोसिटी डायमेंशनलेस, आई टोल्ड, बैंड लेंथ बाय स्ट्रेट लेंथ एंड एस्पेक्ट रेशियो एंड फ्राउड्स नंबर। फ्राउड्स नंबर पूरा पॉपुलर है, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल सब है। इट डिसाइड्स एक्चुअली, फ्राउड्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। V by GD root over, D is hydraulic depth,
All of you know, I think, I assume that you know. And similarly, Reynolds number. कोई actually claim that तुम Froude number है, Reynolds number नहीं चाहिए. Many researchers they also हमारा साथ चैलेंज बताया, लेकिन फिर हम जीता, बोला बताया why Reynolds number is still required here. पाइप फ्लो में Reynolds number को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इनर्शिया फोर्स ज़्यादा है. आई टोल्ड यहाँ पर भी जरूर होता है. ओके, but this Reynolds number also was taken. And slope is also very important. Why? Generally, due to slope only river is flowing. देखो तुम रिवर का देखेगा तो कितना इंटरेस्टिंग है. तो आर जो राउंड है ना, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से होता है और कुछ नहीं. Again, in my class I always tell to my students, 3 कंजर्वेशन से सब कुछ चलता है. कंजर्वेशन प्रिंसिपल, 3 कंजर्वेशन कौन कौन है? टोटल मास, मोमेंटम, एनर्जी. वो भी बहुत सिंपल है. क्या? टोटल मास सेम, एनर्जी सेम एंड मोमेंटम से. देखो इतना सिंपल है. जितना भी है ना, जितना फॉर्मूला, जितना जहाँ पे सॉफ्टवेयर सब कुछ में होता है. ओके, okay, so slope, sorry, I was telling about slope. Slope means actually, you see, flow from higher energy to lower energy, the flow occurs. And due to the gravity, means potential difference, actually the flow occurs in a channel. Okay, you must be knowing about what is the difference pipe flow and open channel flow. Open channel flow में क्या होता है actually? Just देखो, this water is here. If you I'll do like this way, means if you okay, I'll make it flow कैसा हो रहा है? From higher level to वही है रिवर और कुछ नहीं. ओके, लेकिन जो फ्लो होता है उनको एक्चुअली टोपोग्राफी एंड अदर थिंग्स फैक्टर्स उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं. एंड रेस्ट्रिक्ट करते करते सब कुछ चेंज होता है. ज्योमेट्री फॉर्म एवरीथिंग चेंजेस. एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू नो properly and to apply the great benefit to our society. वही तो होता है ना, और कुछ नहीं. हम लोग यही करते हैं, engineers and researchers. Okay, how many factors? 1, 2, देखो 3, 4 and 5. 5 factor is our independent parameter. And depending is what? Again I am telling, discharge. देखो वही है. PhD जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि तुम ओनली एक मैजिक कर दो, ऐसा नहीं. वही सेम डिस्चार्ज के लिए और एक फॉर्मूला निकाल लो, पीएचडी हो गया. बट इट्स सम लॉजिक, इट शुड नॉट बी रिपीटेड. इट शुड बी योर नोवेलिटी. इट शुड हैव द नोवेलिटी ऑफ द रिसर्च. Okay, now I will tell actually how we have done. We summarize, you see, how many factors? Say 6 factors. जो मैं बताया वही फिर very carefully see actually. This was starting actually. जो भी मैं बोला ना, बहुत कुछ philosophical चीज बताया. Don't worry. Now I'm starting. So discharge is depending upon how many factors? 6 factors. Discharge is our dependent variable, response variable, and these 6 are independent variable. Y is discharge. These are x, x1, x2, x3 like that. 6. तो हम कैसा किया देखो, फिर भी नहीं बताएं, अभी बताऊं. How we have done this regression. But thing is that वो समराइज करना भी बहुत बड़ा बात है. एक को छोड़ देने से भी नहीं होगा. एक चीज को छोड़ देने से भी नहीं होगा. कितना टाइम रेस्ट्रिक्शन अच्छे, कितना बड़ा अच्छे, अब 5-7 मिनट बने करो. 5 मिनट. ओके, तो मैं जो बताया ना, व्हाट इज साइनोसिटी, यहाँ पर लिखा हो गया है. डोंट वरी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, दीज आर रिटन हियर. फिर भी देख लो. सॉरी, एस्पेक्ट रेशियो, ऑल द थिंग्स आर. एंड रेनॉल्ड्स नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर? यू नो व्हाट एक्चुअली इट मेक्स डिफरेंस. टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो बोलते हैं ना, वो रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था, उनका नाम में रहा है एक्चुअली, टू मेक रिमेंबर एक्चुअली वो है.
फ्राउड्स ऑल्सो साइंटिस्ट स्लोप। तो हम लोग क्या किया एक्चुअली, इतना जो पीएचडी स्टूडेंट्स एंड जो एमटेक स्टूडेंट काम करते हैं ना, वो पेपर पढ़ते हैं। हमारा लाइब्रेरी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पूरा करोड़ रुपीस होता है खर्चा। कैसा खर्चा होता है, पेपर जो होता है उधर में रहता है, ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं जाकर। एक साल स्टूडेंट को सैलरी मिलता है 35,000, अभी वो भी 70,000 हो गया। प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप ऑल्सो 70,000। NIT Raipur also our students will be getting fellowships. So 70-35,000 per month वो सब होता है। तो जो होता है दे पेपर से देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, एंड देखा कि कहाँ कहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल करने के पहले एक्सपेरिमेंट और फील्ड डाटा रिलायबल नहीं होता है मॉडल के लिए, वैलिडेशन के लिए ओनली होता है, क्योंकि फील्ड डाटा में मैनी एरर्स एरर्स होता है, बिकॉज 1D नहीं होता है, 3D नहीं होता है, मैनी थिंग्स आर देयर, वी कैन नॉट टेल, एंड वो ज्योमेट्री चेंज हो जाता है बाद में, इजंट इट। सो लैब में क्या होता है कि मैंने कंट्रोल, इसीलिए बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट, हमारे कंट्रोल में रहता है, फील्ड में नहीं रहता है कंट्रोल ना। डिस्चार्ज मेजर करते हैं, पिटोट्यूब क्या है, क्या मैंने वो टाइम क्या गया था, ज्योमेट्री चेंज, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग जितना फील्ड में सॉरी एक्सपेरिमेंट में जो था ऑल ओवर वर्ल्ड में समराइज किया गया। देखो, एंड हम लोग एक्चुअली भी 5 चैनल में एक्सपेरिमेंट किए, 5 चैनल में सेम चैनल को 5 बार साइनोसिटी चेंज किया गया, बैंड 5 बार। आई टोल्ड दैट एक बार में पता नहीं चलता है, 2 बार, 2-3 बार में नहीं, 5 बार होने से थोड़ा ठीक से पता चलेगा साइनोसिटी का क्या फर्क करता है डिस्चार्ज के लिए। आप ज़्यादा होने से अच्छा है, लेकिन पैसा भी इतना जरूरत है ना, इसीलिए ऑप्टिमाइज करके 5 टाइम, इसीलिए उनका नाम दिया गया स्ट्रेट, लो मेंडरिंग, माइल्डली मेंडरिंग, देन हाई एलिमेंट, ऐसा नाम दिया गया। 5 मेंडरिंग का नाम एंड सो एक्चुअली, एंड सम अदर डाटा, पहले डाटा बहुत कम था, ओके, जहाँ पर पब्लिश हुआ है, अच्छा पब्लिकेशन हुआ है ऑन द डाटा रिलायबल। ऑलरेडी जो लाइब्रेरी है ACFAC, वो लोग सबका डाटा नहीं होता है, ओके, जो पेपर अच्छा से पब्लिश होता है, एग्जामिनर देखता है, रिव्यूअर होता है, ओके, सो बाय दैट वे ओनली दैट थिंग्स आर, सो ऑल दिस वी हैव टेकन, एंड यू सी आई कैन शो, मेरा जो DST का चैनल है, देखो 4 मीटर वाइड, ठीक है, एंड 15 और 20 मीटर लॉन्ग, मैं भूल गया, सॉरी 15 मीटर आई थिंक, एंड हमारा ओवरहेड टैंक है। वो टाइम व्हाइट वॉशिंग भी नहीं हुआ था, फोटो खींच रहा था शायद, सॉरी ओल्ड फोटो है, वो यहाँ से पानी जाता है, हमारा मॉडल स्टडी करते हैं, ओके, वी मेक इट मेंडरिंग, स्ट्रेट, जो भी चाहिए, एंड मटेरियल भी चेंज कर पाते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट है। हमारा 3 डायमेंशनल वेलोसिटी मेजरमेंट का ADB है, CT है, मैंने इक्विपमेंट्स आर देयर, एक इक्विपमेंट का 50-60 लाख भी होता है, ओके, सो वेरी हाईली प्रिसाइज इक्विपमेंट है, जहाँ पर 3 डायमेंशनल वेलोसिटी कैन मेजर, ओके, एंड दीज आर द, हमारा स्टूडेंट लोग ऊपर में, यू कैन गो हियर एंड टेक द रीडिंग्स, you see, so these are the section where you have taken the readings, test rich, and this is, you see, low sinuosity, then mildly meandering, then highly meandering, you see कितना meandering फर्क होता है। सेम डिस्चार्ज दिया जाता है, लेकिन डेप्थ चेंज हो जाएगा, और सेम डेप्थ करेगा तो डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस meandering इफेक्ट। देखो लास्ट 5th चैनल, कितना, वो तो नेचर में होता है, इसलिए तो हम वी ट्राई टू कन्विंस थ्रू आवर रिसर्च दैट हाउ सेम ज्योमेट्री बट विथ डिफरेंट साइनोसिटी affecting all the things, okay, for straight, then okay, like that way, okay, we'll stop here, I can take a tea, then we'll come and
Finish.
get a model for discharge, stage discharge in a meandering channel, we got a grant. We got a grant from Department of Science and Technology to fabricate 5 meandering channels, and each channel we studied how the discharge and other factors behaving due to change in sinuosity. Okay. So this is the last channel, highest sinuosity. Okay, okay. Okay, land use, land cover. That is actually here we have done only due to band. Band other things we have not, we are not whatever, yes, we have not improved, only due to meandering, because actually due to meandering or sinuosity, larger variation Meiningen occurs. Okay, that land use and land cover, we will discuss on that actually. That is due to obstruction, you can tell. So Meiningen due to obstruction, that is actually get challenging factor nowadays. You see, in Madras and in our also Bhubaneswar, थोड़ा बारिश हो जाएगा ज़्यादा तो क्या होता है, फ्लड. एक्चुअली रिसर्च अभी होगा. दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग थिंग. हम लोग ड्रेनेज का सिस्टम नहीं दिखता ना. फर्स्ट वाटर शुड फ्लो, वाटर को रोकेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ दैट. जो भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और जो भी है और इंजीनियरिंग ये थिंग्स. So whatever the flow it is we are getting from rain, we are पानी को जाना देना पड़ेगा, नहीं तो मेंडरिंग होगा. अब मेंडरिंग को भी नहीं कर पाएंगे, नेचर में होता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो हमारा सिटीज है, दैट इज नॉट पॉसिबल. देन यू सी हमारा कार, ट्रक, सब इवन फ्लाइट भी पानी का नीचे, पानी का अंदर रह जाता है. देखा है ना न्यूज में, न्यूज चैनल कितना ही अपना खुशी में सर्कुलेट करते हैं. मतलब देखा, जब भी न्यूज देखता हूँ तो इमीडिएट आ जाता है चेन्नई फ्लड. अभी रिसेंटली ना, नॉट ओनली दैट, इन यूएसए, ऑल एवरीवेयर हम लोग खाली बिल्डिंग करते हैं. जैसे हमारा इंजीनियर सर ने बोले दैट इज एग्जैक्ट लैंड यूज एंड लैंड कवर. वो तो मैंने इमीडिएट हमारा प्रॉब्लम है एक्चुअली. ओके, what I am telling actually, this is due to band में क्या होता है. ओके, एक्चुअली रिसर्च में थोड़ा फोकस होना पड़ता है. फोकस लैंड यूज लैंड कवर के लिए हमारा दूसरा पीएचडी स्टूडेंट सब काम कर रहे हैं. रिसेंटली पीयूष तो अच्छी पीयूष आसिनी, विश्वजीत, 2 पीएचडी स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं in the Mahanadi river में actually, and due to and another student has started actually the factors. We will discuss on that actually, but this is only purely due to meandering change, due to band change, and other things remain same. Other things को we are not disturbing, नहीं तो रिसर्च नहीं हो पाएगा. अभी डॉक्टर क्या करता है, देखो डॉक्टर क्या करता है, बोलता है कि तुम पूरा एम्प्टी स्टमच में आओ, तुम्हारा ब्लड लूंगा. क्यों? बिकॉज फैक्टर चेंज हो जाता है. रात भर ओके पूरा आराम से नो फूड्स, मॉर्निंग आ जाओ, तुम्हारा क्या ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल जो भी है, यू आर सो यंग, सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन दैट. फिर भी कभी कभी सब जरूरत होता है, बिकॉज डॉक्टर देखना पड़ेगा कि अदर फैक्टर्स को कर देगा तो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाएगा. डॉक्टर विल कंफ्यूज. रिसर्च में भी यही होता है. सपोज इफ यू टेल दैट मटेरियल को, सबको एक साथ मटेरियल के लिए भी हम स्टडी करें, फाइनली विल कंपाइल ऑल, तो हमारा टॉप मॉडल हो जाएगा.
इसीलिए देखो सपोज बता रहा हूँ, तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नाड़ी देखेगा, हाँ? देखेगा तो क्या नाड़ी का कितना होना चाहिए, यहाँ पर हार्ट बीट पल्स रेट 70 होना चाहिए एवरेज, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, फिर रेंजेस से भगवान जो क्या है 60 to 100, देखो 70 तो एवरेज है मैडम, है 60 to 100, 80 होने से भी डॉक्टर बोलेगा ठीक है तुम्हारा, 90 भी ठीक है, 90 से ज्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर को लगेगा कि उनका फीवर है, फिर देखेगा, फिर पैरामीटर देखेगा, टेम्परेचर ऐसा कर गया, फीवर नहीं है तो ब्लड प्रेशर गड़बड़ है, फिर प्रेशर को मेजर कर, सिमिलर टू दैट एक्चुअली, एंड सपोज इफ यू रन एंड कम एंड क्विकली मेजर ऑल्सो, वो भी तुम्हारा पल्स रेट 120 हो जाएगा। सो डॉक्टर हैज टू सी एक्चुअली तुम्हारा क्या सिचुएशन में हुआ है। सिमिलरली दैट हियर वी हैव नॉट डिस्टर्ब अदर फैक्टर्स, डिस्टर्ब कर देंगे तो हम फिर स्टडी नहीं कर पाएंगे, सबको माने ज्योमेट्री, योर रफनेस एंड लैंड कॉप आल्सो डिपेंड द रफनेस, irregularity, उसको we have not disturbed, we have only disturbed the meandering things, and you see and just I am showing the facilities, हमारा हेड में जो पानी जो आ रहा है उधर में एक नॉच है, रेक्टेंगुलर नॉच, we measure, you see first calibrate this notch and depth में पता चलता है कितना पानी आ रहा है डिस्चार्ज, Q is equal to LS how much 3/2 और 5/2, मैं भूल गया, रेक्टेंगुलर का 5/2 3/2, ओके, ट्रायंगुलर का 5/2, थोड़ा हो जाएगा और इंटीग्रेशन होने से हो जाएगा 3/2, एंड कोफिशिएंट फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर अगेन मेनी थिंग्स आर देयर, छोड़ो, सो वी दैट ऑलरेडी कैलिब्रेटेड एंड वी नो द डेप्थ, पानी कितना जा रहा है हम लोग को पता है, इवन टू कैलिब्रेट दिस ऑल्सो हमारा वॉल्यूमेट्रिक टैंक भी एक है, वॉल्यूम टैंक मींस एरिया इज फिक्स्ड यू नो, एंड राइज टाइम मेथड में हम डिस्चार्ज पता होता है कितना पानी चैनल में जा रहा है, लेकिन रिवर में तो हो नहीं पाएगा कभी भी, ओके इतना 4 मीटर है, हमारा बड़ा है, अंडरग्राउंड स्वम्प भी है, विराट स्वम्प है, ओके, एंड वी मेक इट रिसर्कुलेटिंग, कंप्लीट रिसर्कुलेटिंग डेज टुगेदर, हमारा प्रत्युष करता है, हमारा प्रत्युष स्टूडेंट हियर वो लोग सब करते हैं एक्चुअली, ओके, सो वी मेक इट स्टडी ऑल्सो, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी कर लिए, फिर देखो फिर पढ़ाई है, नहीं तो डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा, इसीलिए हम लोग को पूरा 8-10 घंटा फ्लो करेगा, दिखाएगा कि रीडिंग वही डेप्थ चेंज नहीं हो रहा है, उसके बाद रीडिंग लेंगे हम, ओके, सो दिस थिंग्स एक्चुअली सम थिंग्स यू हैव टू फॉलो, देखो जस्ट मोर फोटोज लाइक दिस, वो माने एक बार फैब्रिकेट होता है, 5-10 लाख खर्चा होता है, फिर तोड़ देते हैं, रिसर्च होता है ना, देखो हमारा अरेंजमेंट ऊपर से आकर विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो वी मेजर फ्रॉम द टॉप, जो कि तुम्हारे रिवर में क्या करते हैं, बोट में जाकर तुम्हारा एडीसीपी और पिटो ट्यूब लगाकर हम लोग डेप्थ और वेलोसिटी मेजर करते हैं, 0.6H और 0.2H और 0.8H, और एडीबी में पूरा प्रोफाइल को स्टडी कर देते हैं, ओके, एंड एट डिफरेंट विड्थ में measure it and integrate it and get the discharge in that depth, okay, so we instead of that boat what you do, traveling bridge में ऊपर जाकर पूरा ऊपर से मेजर करते हैं, okay, that facilities are with us, and this we can change it, reaches and bend apex में, crossover में, सब जगह पर मेजर कर पाएंगे हम लोग। My first PhD student actually, Dr. P.K. Manthi, he's I think now retired, he's my senior to me also, okay, he's maybe director or
बड़ा पोस्ट में होंगे गवर्नमेंट में है, मिस्टर पीके महांती, डॉक्टर पीके महांती, माय फर्स्ट पीएचडी स्टूडेंट। ओके, वो प्रिंसिपल कहाँ पर होंगे शायद, मेरी आई फॉरगॉट एक्चुअली। सो यू सी दीज आर द डाटा एक्चुअली। उसको ऑटोकैड में हम लोग फिर ये स्ट्रेट चैनल तो छोड़ो, स्ट्रेट है तो लो, मीडियम, हाईली, वेरी हाई, मेंडरिंग चैनल, तो सबका आई एम टेलिंग अगेन एंड रिपीटेडली दैट वी हैव नॉट चेंज अदर थिंग्स, माने इरेगुलरिटी, material, other geometry also not changed, only changed sinuosity. Okay, so that we can know that sinuosity में क्या फर्क करता है, that our intention was that. So okay, you see sinuosity is written here like that way. And we have also kept roughness is also 0.01 Mannington. Means we are not interested to base value of Mannington को disturb नहीं किया. I am telling you. You see, the stage is a rating curve of the channel. 5 है ना? 1, 2, sinuosity 1 is straight channel, and sinuosity is very high, is 4.11. In between we have varied. हम देखना चाहते हैं कि स्टेज डिस्चार्ज कैसे चेंज हो रहा है, एंड इंटरनल वेलोसिटी भी, 3 dimensional velocity, turbulence, all things how it is changing. Our intention was that actually. Okay. You see, we have summarized. I was showing this table also. 1, 2, 3, 4, 5. उसके बाद and सब Glasgow, Aberdeen. So many, actually हमारा इंडिया में हमारे लोग पहले क्या था, फर्स्ट टाइम बेस्ट इसलिए दिया, अच्छा रिसोर्स होने से पहले दिया देता है गवर्नमेंट, नहीं तो उसके बाद नहीं था, बिकॉज ओके दैट आई हैव टोल्ड. ऐसा नहीं कि तुम जो भी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, रिसर्च प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी मिल जाता है, यू कैन गेट ऑल्सो 100 crores ऑफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, जो कि इमीडिएटली गवर्नमेंट जरूरत है हमारा लेकिन रिसर्च प्रोजेक्ट वो तो बहुत मैंने बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मैंने नहीं मिलता है, बहुत डिफिकल्ट, जो कि रेपुटेशन है एंड पूरा रिलायबल होता है, दिया जाता है जनरली टॉप IITs एंड NIT राउरकेला, हमारा दो टॉप NITs जनरली, वो सब जहाँ पर अच्छा टॉप रिसर्च होता है, गवर्नमेंट मैंने मतलब वर्ल्ड मानता है, उधर में जनरली रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है, बिकॉज मनी पूरा थ्रो किया जाता है, मीन्स टू गेट सम गुड आउटपुट्स, बेस्ट आउटपुट. इसलिए हम लोग देखो ओके एंड अदर्स, इसीलिए हमारा मैंने इट वाज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वर्क. ओके, नाउ व्हाट वी डिड एक्चुअली, एक डाटा के लिए देखो बहुत टाइम लगता है, 10-15 दिन लगता है. आई टोल्ड एक डाटा के लिए आई टोल्ड टू रन दैट एक्सपेरिमेंट थ्रू आउट डेज, वेट फॉर द स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, गेट अ डिस्चार्ज डाटा. सो from discharge again back calculation you get the Mannington, and how Mannington changes with the one, देखो channel 1 stage discharge means Mannington how changing with respect to aspect ratio. Aspect ratio B by H, I told B by H. Why? Where H the depth, the stage is there, stage non-dimensional parameter we are taking by the aspect ratio. Okay, so we are getting this stage discharge curve like this. देखो तुम देखे होगा stage discharge curve और rating curve, river is different, here is different, here is actual. river तो पूरा field है, मैंने natural. Okay, and anyhow you see these things actual data we got it like this. Mannington aspect ratio में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब we studied this 4 and 5, लेकिन जब स्ट्रेट होता है ऐसा मीन्स sorry this is Mannington का variation, sorry this is Mannington variation. Mannington is generally is not constant, it is changing. You see here Mannington हम लोग इंजीनियर लोग का क्या n is constant ले जाते हैं. देखो
with respect to age, in aspect ratio, it is changing, and with respect to sinuosity also it is changing. That means taking Mannington is a constant, it is a great flaw. You see in this result. Okay, even हम लोग तो माने Mannington को पूरा constant ले जाते हैं. And you see, हाँ okay, for this channel it is okay. Mannington तो 0.014 है, ठीक है. But others you see, it is increasing or decreasing like that way. We should see actually how it is increasing, decreasing. That things you have to study, and finally you have to give some formula or equation or model, whatever you can tell, so that immediately this n को corrected n हो सकता है. Okay, so Mannington variation with respect to aspect ratio. Please try to okay, all of you okay this? Then I'll show actually. So this is dependent variable. How independent variable से change होता है? 1. So how many variables I have told? Independent variables? 6 है. एक आ गया. अभी देखो मैं दिखा रहा हूँ फिर. Another 5. देखो फिर. How Mannington Reynolds number. माने डिफरेंट तरीका में हम दिखा है. Mannington डेप्थ का हिसाब से चेंज हो रहा है. Mannington Reynolds नंबर इसमें चेंज हुआ है. देखो वो तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा है, कभी ऐसा है. Okay, some trend it is following, but still many people are silent. We wanted to convince actually by this research. Okay, you see, channel 1, 2, 3, 4, 5, straight to highest meandering, how it is behaving. You see again, Froude's number के साथ भी चेंज हो रहा है. And people claim that all 6 are it is affecting that. And you see, slope भी चेंज करता है. देखो, एक रिवर दूसरा रिवर का स्लोप चेंज हो रहा है. Even only one river or different reaches slope are changing. Not it? तो slope भी Mannington चेंज करता है. I am not telling a model dependent, but Mannington is dependent upon geometry. Mannington depend upon the irregularity, our land use land cover. Okay, all the things. Depth. Mannington depend upon that. It is not constant. Okay. You see, even it depends upon the slope. Okay, so these things we convinced through these graphs. And finally, with sinuosity. एक sinuosity देखो, एक again sinuosity में change हो रहा है, different sinuosity. हम plot किया, keeping aspect ratio same, keeping depth same. हम दिखाना चाहे depth same, sinuosity different, other things same. Mannington कैसे change हो रहा है? These are the graphs. बहुत logic है. मैंने properly understand actually. So ऐसे only graph बना देने से नहीं होता research. Research you have to know actually how you are reaching to the conclusion, proper conclusion. That is research. And best relationship also we have found it in each graph. Mannington with respect to sinuosity, this is the formula. Individually, I have told you multilinear. तो एक एक को संपर्क पहले निकाला. How? Okay, that dependent variables, each independent का साथ कैसा संपर्क है, हम बेस्ट फिट निकाला. ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर logarithmic ln. क्यों? R square is how much? Coefficient of determination is 0.97. बहुत हाई है, बहुत अच्छा है. पूरा तो 100% एक्यूरेट नहीं हो. ओके, मोस्ट एक्यूरेट. दूसरा रिलेशन अच्छा नहीं दिया. हम बोला कि तगड़ा संपर्क है, Mannington sinuosity is only logarithm. And through this we claimed, and logically, okay, and previous things also I want. Okay,
देखो, and this is by quadratic equation, and previous thing is and logarithmic, and this is power function. मैं जो previous का दिखा रहा हूँ, and this is also power function. Okay, so all these 5 I summarized दिखाया. पहले हम बताया देखो कैसे चेंज हो रहा है. फाइनली संपर्क क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, बेस्ट स्ट्रांग रिलेशनशिप. इंडिविजुअली वी आर मैप्ड एंड दूसरों को सेम रख कर, फिर देखो बहुत डिफिकल्ट है, लिबर में नहीं होगा, जो लैबोरेटरी वी हैव टू रिलाई डिपेंड. यू सी, फिर मैथमेटिक्स को यूज किया गया, सबका संपर्क इंडिविजुअलिटी हो गया. फिर फाइनली एक संपर्क चाहिए, सबको देगा एक मॉडल जो कि फिट फॉर एनी टाइप्स. तो उसको एक सॉफ्टवेयर फिर हमारा स्टूडेंट निकाला, हाँ वो टाइम 15 साल के पहले. उनका नाम मैथमेटिका, मैं भूल गया अभी, आजकल तो बहुत फेमस हो गया हमारे. एक्चुअली मुझे याद है कि हम लोग वर्ल्ड में पहले मल्टीलिनियर रिग्रेशन को, इसको अभी तो सब फील्ड में देख रहा हूँ, बहुत सारी काम चल रहा है सबका, पता नहीं शायद स्प्रेड हो गया. ओके, मैंने दिस फील्ड में मैं देख रहा हूँ बहुत. मैं IIT गुवाहाटी गया था कीनोट, और दूसरा में गया था, मैं देख रहा स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑन दैट आल्सो. आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो जो टेक्निक यू कैन अप्लाई एनीवेयर, नॉट ओनली मैनिक्सन, नॉट ओनली डिस्चार्ज, एनीवेयर यू कैन अप्लाई. बट यू शुड नो, अंडरस्टैंड द इनसाइट, क्या क्या पैरामीटर इफेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब फैसिलिटी चाहिए, डाटा भी चाहिए, सब चाहिए, लिटरेचर चाहिए. ओके, फाइनली वो जो फॉर्मूला से एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर करेगा काम. फिर आजकल तो सॉफ्टवेयर है मैथमेटिका और एक्सेल में भी है, मल्टीलिनियर रिग्रेशन टूल एक्सेल में भी है, बहुत इजी. डालो वो फॉर्मूला, वो दे दिया. दिस इज एस्पेक्ट रेशियो टेलिंग अबाउट द डेप्थ फ्लो. दिस इज स्लोप, साइनोसिटी SR, रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्राउड्स नंबर. फाइनली एन हो गया. ओके, एंड दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला. वो फंक्शन जो निकला मैं बताया, इंडिविजुअल संपर्क था, जो लॉन था, पावर था ना, फाइनली कर देने के बाद इतना बड़ा फॉर्मूला. आजकल तो कंप्यूटर है सबके, बड़ा छोटा में क्या है, दे देने से काम कर देगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए. दिस द बेस्ट. लेकिन बिलीव कौन करेगा, बिलीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन चैलेंज हो जाता है PhD होने के लिए. दूसरों का डाटा बोलेगा कोई कि तुम मैनिपुलेट कर दिया तुम्हारे NIT में, वो भी हो सकता है ना. NIT राउरकेला और सपोज वहाँ पर IIT में होता है, तो मैनिपुलेट कर देंगे स्टूडेंट लोग, और प्रोफेसर भी उनको हेल्प कर देगा. इसीलिए क्या होता है, वी हैव टू वैलिडेट टू अदर डाटा, रिवर्ब का डाटा भी करना पड़ता है. इवन यू हैव टू कंपेयर विद अदर मॉडल जो है सॉफ्टवेयर में, जो इक्वेशन है, सॉफ्टवेयर बोलने से नहीं होगा, उनका जो मैथमेटिक्स है मैनुअल में, उसको देखना पड़ता है. वी हैव डन आल्सो दैट थिंग्स, आई विल शो दैट. तो यू सी, हमारा तो प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट डाटा बोल दिया. हमारा एक्सपेरिमेंट जितना सारी फॉर्मूला दुनिया में था, सबका साथ हमारा फॉर्मूला भी, एंड हमारा डाटा में दिखाया गया. कवान वो सब है ना, डिफरेंट फॉर्मूला में दिखाया था जो लिटरेचर का, सबका फॉर्मूला डालकर दिखाया गया कि एन कौन सा बेस्ट है. एक्चुअली एक्चुअल डिस्चार्ज से मैच करना से होगा, इसलिए. एंड वी सी दैट प्रेजेंट मॉडल वो पूरा जो बेस्ट फिट लाइन का पास है पूरा. देखो हमारा पूरा एकदम. दूसरा का मॉडल को हम बता देंगे, मैंने इतना अच्छा नहीं, पूरा ओपनली चैलेंज्ड. और नहीं करने से अच्छा पेपर नहीं होता, PhD भी नहीं होता. पेपर होने से तो PhD होगा. SCI जर्नल, आई एम टेलिंग, SCI जर्नल है जो हम लोग एक्चुअली NIT राउरकेला एक्सेप्ट नहीं होता है. ओके, एंड ओल्ड IITs में भी एक्सेप्ट नहीं होता है. बोला अच्छा IIT जो यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, वो जो आजकल जर्नल होता है, जॉब भी मारो मिल जाता है. बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली, यू हैव टू ट्रस्ट इट. नाउ वी सी व्हाट वी डिड. हमारा तो डाटा हो गया, फिर
फ्लड चैनल फैसिलिटी एट यूके का है, उधर का डाटा में हम लोग हमारा फॉर्मूला उधर का फॉर्मूला पे यूज किया गया, हम दिखाया कि हमारा बेस्ट है। देखो हमारा जो है ना मॉडल है यहाँ पर, देखो दिस लाइन में इज द बेस्ट फिट लाइन एंड इट इज कैटरिंग वेरी क्लोज टू हियर, मीन्स आवर मॉडल इज बेस्ट। लेकिन दूसरा का मॉडल जो है ना कितना बाहर में, ओके वो सब करना पड़ता है। एससी में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर जर्नल में जहाँ इनका पब्लिकेशन है, आई रेस्पेक्ट, आई एम टेलिंग यू, टॉप स्टैंडर्ड। वो उनका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा नहीं, इम्पैक्ट फैक्टर सबका ज़्यादा नहीं होता है, ओके बहुत टॉप जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर नहीं होता है। दे आर नॉट वरीइंग अबाउट कितना इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे हमारा कितना फीस ज़्यादा है तो अच्छा कॉलेज, ऐसा नहीं होता है, होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत टॉप जर्नल्स इम्पैक्ट फैक्टर बहुत कम होता है, बिकॉज वो लोग में पता नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो चार्जिंग समथिंग टू रीड पेपर्स, नहीं पढ़ पाता ज़्यादा लोग तो इम्पैक्ट कम होता है, नॉट दैट क्वालिटी कम है। एफसीएफ फ्लड चैनल फैसिलिटी इट इज यूके, उनका डाटा में भी हम लोग वेरीफाई किया एंड वी चैलेंज दैट आवर मॉडल इज द बेस्ट मॉडल। इवन सेलिन एक अनदर साइंटिस्ट वो यूके का भी है, ओके वो बहुत फेमस है अपन चैनल में, उनका डाटा भी हम लोग दिखाया कि उनका डाटा में दूसरा का मॉडल कहाँ पर देखो ऊपर में बेस्ट फीड लाइन यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है। एक्चुअली मैंने एक फिगर में दो दे दिया, छोटा हो गया। इवन सियानो डाटा सबका डाटा एंड मेरा पीएचडी का टाइम का भी डाटा मैं दिखा कैसे हमारा मॉडल ठीक हो रहा है, नहीं ऐसा मॉडल बना दिया दे दिया तो ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा ओके, फाइनली एक रिवर डाटा जहाँ पर अवेलेबल था, रिवर आई थिंक मैन और आई फॉरगॉट एक्चुअली, आई हैव टू सी, ओके रिवर मैन आई थिंक इन द यूके, वो लोग डाटा रखे हैं, छोटा रिवर है बट हमारे लिए तो वैलिडेशन चाहिए ना, इंडिपेंडेंट डाटा। एंड दीजिए तो क्रॉस सेक्शन नेचर का देखो, रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्रापेजोन नहीं है, ऐसा एंड यू सी डिफरेंट मेथड्स, हमारा मॉडल यहाँ पर होता था। वो देखो पूरा तो लाइन में नहीं आएगा ना, कोई मॉडल दुनिया में नहीं होगा, लेकिन देखो हमारा मॉडल फुल्ली साइंटिफिक, ओके एंड अदर्स देखो जो है बड़ा सॉफ्टवेयर में दे रहा है, उनका देखो कहाँ पर है, इसलिए ओके आवर पेपर बिकम फेमस, दिस पेपर many softwares actually, and even we have compared in terms of this, okay and our model different model। देखो हमारा मॉडल का एरर मीन एब्सोल्यूट वो भी करना पड़ता है पेपर में, रिसर्च में, वो सब नहीं दिखाने से पब्लिश नहीं होगा। तुम जो मॉडल डेवलप किया, इक्वेशन डेवलप किया, यू हैव टू अगेन सो दैट हम कैसे बेटर बेस्ट बेटर नहीं बेस्ट होना पड़ेगा। You see our error, different data, river data and other data, बड़ा डाटा, हमारा खुद का डाटा, तीनों में हमारा खुद का डाटा थोड़ा भी एरर, anyhow we are best even in terms of different error techniques। एरर के लिए एफिशिएंसी ऑफ ए मॉडल के लिए बहुत सारी है, मीन परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, many you know it, you know to measure the strength of the models we have this different types of error we have tested everywhere। our model 2015 में जो हुआ has shown the best, तो सबका डाटा में बेस्ट है एंड सबका उनका कंपैरिजन टू द अदर मॉडल आल्सो वी हैव shown the best, वही होता है एक्चुअली। and this is our mean square error सब जाओ, and these are the formula जो error फेरर का formula, suppose
I don't remember, that's why I have kept, if I want to see, वही से कैलकुलेशन हुआ है एरर का. MP mean percentage error, mean absolute percentage error, root mean square error, many error. जो भी एक को कभी कभी एक मॉडल एक में एरर का टेक्निक से अच्छा होता है, दूसरा में थोड़ा कम होता है, अच्छा होता है कम होता है, ऐसा होता है. इसलिए वी हैव जितना भी है टेक्निक्स टू गारंटी अबाउट स्ट्रेंथ, उसको भी हम लोग क्या है, सो दैट मैं बोला हमको तुम करो जैसा कि तो इतना ट्रांसपेरेंटली अच्छा से ऑनेस्टली किया तो यू हैव टू शो टू द वर्ल्ड सो दैट तुम्हारा काम को रिकॉग्नाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. ओके. Finally, this paper was accepted in ASC. Okay, so I told about multilinear regression techniques to find the Manning's n. Manning's n से डिस्चार्ज निकल जाएगा आराम से, स्टेट डिस्चार्ज मीन्स Q इज इक्वल टू, और फर्क नहीं है, दैट 1/n R2/3 एस हाफ इंटू एरिया, एवरीथिंग यू नो. हम लोग दिखा है कि n में क्या क्या सब चीज है, इट इज इनकम टू एवरीथिंग. ओके, डाउट पूछो, एनी डाउट्स? एंड एक्चुअली मेरा और भी है वही टेक्निक में हमारा, दिस इज वर्क फॉर भवानी जिन NIT पटना में है, उनका पेपर है, लेकिन आई डोंट वांट दैट, आई विल टेल यू अगेन टू मेक इट बोर तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा माइंड में मुझे नहीं लगता है कि सबका फिर रिसीव करेगा ठीक से. ज़्यादा हो जाएगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आई कैन टेल, आई नो. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड. सिमिलरली हमारा उनका PhD का मैच है, नॉन प्लेसमेंट, और एक इक्वे इंडिया प्रोजेक्ट मिला था हम लोग, वही टेक्निक से भी हम लोग क्या, मैं फटाफट बता 2 मिनट में देखा, ओनली स्लाइड दिखा रहा हूँ. आई विल गिव यू दैट. एक्चुअली ड्यू टू कन्वर्जिंग, देखो जैसे हमारा इंजीनियर सर ने बताया कि ड्यू टू आवर लैंड कवर में इट मेक्स इट कन्वर्जिंग रिवर सेक्शंस. हम जो ओके, यू सी settlement of the population actually occurs near to the rivers, and it makes क्या converging and diverging. वही क्लेम करके बताया कि वो भी फिर चेंज कर देगा मैनिंग से एंड डिस्चार्ज, वही करके दूसरा प्रोजेक्ट फिर लाया हमें, तो आइडिया होने से. ओके, एंड दिस इज इक्वे इंडिया प्रोजेक्ट एंड भवानी डिड PhD. आई एम जस्ट वेरी क्विकली, भवानी हमारे प्रोफेसर चित्तो का फ्रेंड है ना. यस, सॉरी, दिस इज ऑल्सो बंदिता, हमारा अनदर स्टूडेंट का काम भी दे. ओके, वही सिमिलर देखो टेक्निक है क्या है, सिमिलर ओनली प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, काम हो गया. ओके, एंड वही तरीका में ऐसा किया. एंड मेनी वर्क्स वी हैव डन नॉट ओनली फॉर मैनिंग एंड वो तुम्हारा जो फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कभी कभी जरूरत होता है कि इंजीनियर लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो कितना है, वही टेक्निक से हम लोग क्या है. इवन कभी कभी जरूरत होता है तुम्हारा इरोजन, सेडिमेंटेशन, बहुत खर्चा होता है ना. सो बिकॉज बाउंड्री शेयर को पता होने से यू कैन नो प्रॉपर्ली हाउ मच इरोजन हो रहा है, सेडिमेंटेशन कहाँ पर है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, दैट थिंग्स ऑल्सो इट विल आंसर फ्रॉम दिस. दैट्स व्हाई वी हैव ऑल्सो वर्कड ऑन दैट. So very quickly, actually, I think I finished. Yes. मैं जल्दी कर दिया because I know that ज़्यादा अंदर पूरा एकदम डिटेल्स आस्ते आस्ते if you discuss I can tell more and more because मेरा हाइड्रोलिस में मैंने लाइफ बीत गया. I'm telling बहुत मैंने बिगनिंग टू एंड अभी तक मैं पूरा एकदम आई लव रिसर्च, कुछ मैंने कंट्रीब्यूट करने से मुझे अच्छा लगता है. ओके, थ्रू रिसर्च बिकॉज NIT राउरकेला में बहुत अच्छा फैसिलिटी है. वो तो इसलिए हमारा बेस्ट NIT है. 2 NRF में कभी के 2 नंबर हो जाता है, लेकिन एक्चुअली एवरीबडी नोज NIT राउरकेला इज बेस्ट, सबको पता है, एवरीबडी नोज. हम लोग डाटा नहीं देते हैं, जैसे हमारा OUTR अभी डाटा कुछ NR नहीं दे रहा है तो NR रैंकिंग में नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है गवर्नमेंट में. और जो डाटा स्मार्ट कर दे देता है उनको ठीक से हो जाता है. आई एम नॉट टेलिंग एनी हाउ दैट इज ऑल्सो ओके. डाटा देना पड़ेगा अभी ना, तुम नहीं देगा डाटा, एग्जाम नहीं लिखेगा तो मार्क कैसे मिला है फिर.
बोलेगा मुझे पता है सब, nobody will recognize ना, बट हमारा स्टिल इन ये रिसर्च में भी जो कंपोनेंट है ना NIRF के, NIT राउरकेला 3-4 नंबर में है, तुम देख सकते हो. All over what I am telling you, compared to old IITs also, we are comparable fully. Okay, उड़ीसा में तो 1 नंबर है. Okay, इवन ईस्टर्न जोन में 2 नंबर है IIT खड़गपुर के बाद. Okay, so just I am proud I can tell that. Because हम लोग एक्चुअली मेनी फैक्टर्स आर देयर, अगेन वी हैव टू थिंक व्हाट आर द फैक्टर्स. हमारा रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसीलिए सब IITs NITs में रेसिडेंशियल होता है. अंदर में फैकल्टी रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, रात को भी काम करेगा. मैंने दे विल थिंक दैट पूरा एंजॉय करते हैं, फिर आ जाते हैं रात को मैंने पढ़ते हैं. ये स्टूडेंट्स आर देयर, दे नो ऑल्सो. हमारा दिन रात कुछ फर्क नहीं है, ओनली सोने का फर्क है. रात 9-10 बजे रोज सो जाते हैं, उस टाइम ही फोन आता है, लेकिन प्रेशर नहीं है. आई एम नॉट टेलिंग, नेवर लिव विथ प्रेशर. मैं तो कभी भी आई डोंट, यू नॉट इट, मैं क्लास ऑल्सो आई टेल नेवर बी प्रेशर. प्रेशर होने से रिसर्च नहीं होगा. एंजॉय करो. एंड बाय दिस वे एक्चुअली वी हैव डन एक्सीलेंट इन आवर पे. ओके, सो प्लीज आस्क, कुछ भी पूछो. Recently, okay, you see actually that slides I'll show in that I'll go to NIT Warangal after this. इसलिए एक बार छुट्टी ले आया मैं, नहीं वारंगल जाऊंगा. एंड देयर आल्सो आई विल टेल हिस्ट्री अबाउट माय एक्चुअली. सो आई स्टार्टेड this project, that project 2008. Okay, so first project about sinuosity, then about convergent divergent. Recently एक प्रोजेक्ट मिला है DST का 80 lakhs. Another student is working, Suchita, on study, and we are collaborating with France. One of my student actually Gyanaranjan Khuntia, he has got a Raman Chapter fellowship. Okay, NIT Raikla student, he was there for 1 year. Many students actually visit to UK and stay there and come back. और साइनी जो उनका जो दिखा है ना, वो भी also studied in UK. Okay, so recently we are working on unsteady flow. Again challenging is that many changes on steady, वो भी कहाँ पर नहीं है किताब. जितना भी तुम्हारा किताब बुक है, you see that with assumption is steady flow ना, but real challenge is unsteady. इतना जल्दी जैसे चेन्नई फ्लड हो रहा है, जब मैंने इमीडिएट बारिश हो जाता है फटाफट ना, no paper, no war case, still actually that is lagging, and we are doing on that. मेरा अभी 70 lakhs का जो प्रोजेक्ट है, हाइड्रोग्राफ जनरेटिंग सिस्टम हम लोग लेबोरेटरी में कर रहे हैं. जैसे हाइड्रोग्राफ जनरेट करेंगे in a control manner, and we will see how in the accelerating limb and for decelerating limb of this hydrograph, how the stage discharge and all the parameters changes. Okay, and whatever the depth of velocity we are getting, the steady flow. On steady cap, we are doing that on that now, and I will present in that hydro, because हमारा जो दुनिया में जितना हमारा all over world में अभी gathering होगा, and I have been invited as a keynote speaker there. Okay, I will present that outputs. So that is also a France का साथ मेरा collaboration था. Around some crores France, okay, that project Lyon, and they have invited me as a visiting professor for 3 months. I was with family there. Okay, I have guided their postdoctoral students and PhD student also there. वही on study में. Okay, so and that professor नहीं, उनका नाम डॉक्टर, बिकॉज साइंटिस्ट वो थे, डॉक्टर प्रूस्ट, सेबास्टियन प्रूस्ट. Okay, he is working on that now, and he has visited our NIT राउरकेला स्टेट. देखो जो रिसर्च अच्छा लगता है वो दिल्ली अच्छा नहीं लगता है. राउरकेला में कुछ नहीं. NIT अच्छा है, हमारा एक वर्ल्ड है NIT राउरकेला, बहुत बड़ा कैंपस है, पूरा बाउंडेड ना, कंट्रोल जैसा, बहुत ब्यूटीफुल है. And inside that actually he had stayed for 10 days
10-15 days उनका स्टूडेंट भी सब मैंने कोलाबरेटिंग लाइक दैट एंड आई हैड गॉन ऑल्सो. मुझे भी लोग बुलाए 3 महीने. मुझे बोला कि प्रोफेसर कितना टाइम आ सकते हैं, उनका पैसा नहीं. एवरी मंथ 5 लाख मुझे दिए. देखो रिसर्च में कैसा होता है, अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी आई वाज गेटिंग 5 लाख. खर्चा भी हो जाता था फैमिली के साथ ना. ओके नहीं तो इतना मैंने फ्रांस का मैं चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके दैट इज उनका गवर्नमेंट का सब होता है. इसलिए रिसर्च में पैसा का नो बाउंड. आई एम टेलिंग. तुम लोग भी ऐसा, जो हमारा पोस्ट डॉक जाता है, हमारा स्टूडेंट जाते हैं, वो लोग भी बहुत पैसा मिलता है. इसलिए रिसर्च में इवन इंजीनियर लोग भी हमारा जो सर जाएंगे भी, इसलिए प्लीज गो, आपको बड़ा करो, देखो सबको दुनिया, तो हमारा देश भी और प्रॉस्पर करेगा. हाँ हम लोग ओनली जब कोलैबोरेशन होता है इंजीनियर्स एंड हमारा एकेडमिशियंस, बेस्ट होता है. पढ़ाई का रह जाएगा क्या फायदा. फाइनली तो हम लोग सेवा करने के लिए ना. यस दैट इज ए फाइनल थिंग. एंड वो सब उधर में होता है. फ्रांस में था रोन रिवर एंड सोन रिवर. हम बहुत सारे पिकनिक करते थे हम. एंड आई एम टेलिंग यू दैट हाउ एक्चुअली दैट प्रोजेक्ट कैसा आया. मैं यूएसए गया था एक कॉन्फ्रेंस में, उनका नाम रिवर फ्लो. हमारा पीएचडी स्टूडेंट भी गए थे. रिवर मिसिसिपी के ऊपर हमारा बोट जा रहा था. मैंने हम लोग एंजॉय करते थे. आई एम टेलिंग रिसर्च में ऐसा होता है, जो कॉन्फ्रेंस जाते हैं और बड़ा बड़ा पार्टी होता है. ओके उधर में भी खर्चा बहुत होता है, मैंने उसको लिमिट नहीं होता. ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली वी आर थिंकिंग एक्चुअली in which field we can extend our thing collaboration. तो सेबेस्टियन एंड माई सेल्फ, उनमें नाम बोलते हैं एक्चुअली, डोंट टेल प्रोफेसर. मैं उनका नाम बहुत बार बोला, डॉक्टर सेबेस्टियन, पूरा घुसा हो गया. यू टेल ओनली सेबेस्टियन, नो डॉक्टर. आई विल टेल यू किशनजीत, लाइक दैट वे डॉक्टर एनी हाउ. यस यस. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज हमारा 1 साल भी सीनियर से हम सार बोलते हैं हम यहाँ पर. इवन जो बुल्ला में पढ़ता था तो मेरा सीनियर को भाई बोलते तो मार खाते हैं यहाँ पर. I never forget that things. सेकेंड ईयर में 5 बार यहाँ पर फंस. बिकॉज कभी मुझे ऐसे कोई हट नहीं किया था हमारा, मैंने बिकॉज मैं इतना अच्छा पढ़ रहा था, स्कूल में टॉप हो रहा था, तो इतना अच्छा था, मैं टीचर लाइक करते थे, तो इतना मार दिया तो यहाँ पर सीनियर, तो मैं पूरा कैसा हो गया. मैं सोचा और कुछ नहीं करूँगा, मैंने आई डोंट रिक्वायर एनी डिग्री, छोड़ दूंगा. मैं बोला सर क्यों मारा मुझे. फिर सर बोला I never forget that, because मुझे कोई ऐसा खुशी में पता नहीं मार देगा यहाँ पर 5 बार unnecessarily. That is not a good actually. Anyhow, the things. So I am telling you, so enjoy, and this is actually whatever things you are doing. पेपर में कर दे देते हैं, लेकिन फाइनली अभी नहीं होगा, बाद में 15-20 मैंने 100 साल का बाद में आएगा काम. ऐसा होता है. देखो चो भीटी चो किताब ना कितने बढ़िया, तो मरीगले ना. से कौन जानी थी आम मैंने सब सफ्टवेयर अच्छे, कि देखो मैंने वो सब होता है. इसलिए मैंने काम करो, मैंने एवरीबॉडी नोस. इसलिए रिसर्च में बहुत खर्चा होता है, पता है. आवर पीएचडी स्टूडेंट्स ऑल्सो आर गेटिंग 70,000 एज ए प्राइम मिनिस्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है. सैलरी मैंने जॉब में नहीं होता इतना, 70 और 80,000 देता है पर मंथ. डिग्री मिलेगा, सब मिलेगा. इवन 35 अभी है जो नॉर्मल, लेकिन 70,000 प्राइम मिनिस्टर पहले. मेरा सब स्टूडेंट को तो मिलता है, मैं देख रहा हूँ. मेरा जितना मेरा अंडर में, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, सब वो लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, सर मेरा हो गया, तो मैं बोला थैंक्स, मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे आकर पार्टी दे दो बाद में. वो लोग आकर देते हैं. फिर ज़्यादा नहीं खाता हूँ, लेकिन आई जस्ट स्पेंड सम टाइम विद देम, आई एंजॉय दैट थिंग. ओके. ओ सॉरी, सेबेस्टियन प्रूस्ट फिर आए, तो सॉरी हम ये, तो उधर में वही कोलैबोरेटेड. उनको भी एक प्रोजेक्ट मिला, अराउंड इंडियन का हिसाब से कुछ 50-30 करोड़ होगा. 30 करोड़. ओके. सो एनआईटी राउरकेला